Oh, what a sick. Okay. I thought that you guys wanted to be in the physical class. Monday, tomorrow. Tomorrow, sir. Okay, okay. No problems. So other people will join us. Let's start our lesson. So Unit 7 is about past simple, of course. And we were reading the text. Today I'm going to read um, the first story, first in the history, the first air journey and the first man on the moon. And this text will again give you good revision for the past simple. Lots of sentences, everybody. There are lots of past simple sentences. Observe them, look at their verb patterns, okay, and everything. Okay. Just give me a second. Let's start with this. Always try and compare the sentences you are learning with the message there, and if you can find a similar pattern. Okay, so we were reading the first part, and I remember I drew an illustration in our last class on Saturday on July the 25th, 1909. So beta, normally in English we say in July, in April, okay, but when the date is given, then we can't say in. The reason is in is not used before dates. In is not used before dates. On is used before dates. Right? On the 26th of January, on my birthday, on my on Wednesday, on Sunday. So similarly, on July the 25th. यहाँ बोलने का मकसद द पर्पस इज जुलाई नहीं है, पर्पस है 25 तारीख जुलाई का. तो 25 तारीख द डेट इज अ डे ना, तो ऑन लगाएंगे, इन नहीं. इसलिए ऑन जुलाई द 25th. ऐसे नॉर्मली मन में क्या आएगा सोचने का, यार जुलाई लिखा है उसके पहले तो इन लगाना चाहिए, राइट? बट बिकॉज इट इज नॉट जुलाई ओनली, one particular day of July, and that particular day was the 25th. So on July the 25th, on July the 25th, a Frenchman means someone from France. A Frenchman is a person from France. A French woman is a woman from France. Frenchman, French woman, okay? Englishman, English woman, a Dutch man, okay, Dutch woman, okay, like this. Sometimes we use the word man and woman to refer to someone from a place. So on July the 25th, a Frenchman, comma, Louis Blériot. Good Blériot morning, is his sir. name, right? Hello, good morning. Became the first man to complete an air journey. He became the first man to complete an air journey when he flew from Calais. He became the first man to complete an air journey. It means before him, nobody ever completed an air journey. He became the first man to complete an air journey. And how did he do it? He flew from Calais. He flew from Calais. Calais is the name of a place where in the north of France. He flew from Calais, capital C, right? So he flew from Calais. It is a place in the north of France to Dover. He flew from Calais to Dover. All right. He flew from Calais to Dover. Calais se Dover gaya. All right. He flew from Calais. The starting point was Calais and the end point was Dover. He flew from Calais to Dover. Where is Dover, by the way?
It is in the south of England. Written after Dover, you can see after comma, in the south of England. It is in the south of England. Dover is in the south of England. So he flew from Calais to Dover. Blériot's flight amazed the whole of Europe. Amazed. Subject verb in English language, when we write sentences, then there is a definite structure to every sentence, common structure. And what is that common structure? There is a subject and there is a verb. A subject is something or somebody, and then there is a verb. So here the subject is Blériot's flight. Blériot's flight. Blériot's flight amazed the whole of Europe. If something amazes you, then you can't believe it. It's so unreal. It's so rare. I gave you an example in my last class that if somebody jumps like this for, let's say, 4 feet, 5 feet, then it will not amaze you, because you know human beings can jump 4 or 5 feet like this. But imagine a person jumps 10 feet, 10 feet. Then you will say, wow, 10 feet up. Means gravity allowed him to go up 10 feet. That will amaze you. So something that amazes you is not common. Common things don't amaze you. Ordinary things don't amaze you. Extraordinary things amaze you. Another word for amaze is surprise. But surprise is not so strong. Amaze is stronger. When you say surprised me, you say, okay, strong. Your emotions are stronger. You're like, wow, that's good. You're surprised. Wow, that's good. That's amaze. Okay. So Blériot's flight amazed the whole of Europe. People thought that such a journey was impossible, right? Now you understand why this line here? Because people thought such a journey was impossible, they were amazed. Those people were amazed. They couldn't believe that a man flew from Calais to Dover in an aeroplane, because people didn't think such a journey was possible. They thought such a journey was impossible. Okay. When my daughter was young, in Bihar Sharif, whenever I took her to a party, when she was 2.5, 3 years old, and she talked to me in English all the time, then that amazed people. They said, how does she speak English, sir? How did you teach her English? They think English is something to be taught. People think that English is something to be taught. सिखाई जाने की चीज है. It is something to be taught. सिखाई जाने की चीज. Something to be eaten. खाए जाने वाली चीज, right? Something, they think, everybody thinks English is something to be taught. English is just a language. You know, you can learn this language if somebody uses this language with you all the time. Just like if somebody speaks Punjabi to me all the time, then I will start speaking Punjabi too. Similarly, if somebody talks to you in English all the time, you will also learn English. So that amazed everybody. My daughter's language, my daughter's English amazed everybody. They thought, how does she speak English like that? She's only 3. She can't even write ABCD. And she's speaking English. Just because we talk to her in English, she learned to speak. The flight. The flight wasn't easy. The flight wasn't easy. The flight wasn't easy. Okay. Such as these sentences are sentences with be verb, right, guys? The flight wasn't easy. Here the verb is be verb. And that's why we don't see didn't. यहाँ नेगेटिव में didn't क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि वर्ब कोई और वर्ब नहीं है, बी वर्ब है. अगर कोई और वर्ब होता तो हमें didn't देखने को मिलता नेगेटिव के लिए. जैसे he didn't go, he wasn't go तो नहीं बोल सकते. He didn't go. For example, we didn't win, क्योंकि win भी तो वर्ब है, जीतना. तो कोई भी और वर्ब को नेगेटिव करने के लिए didn't चाहिए, लेकिन बी वर्ब को नेगेटिव करने के लिए didn't नहीं चाहिए. The flight wasn't easy.
wasn't यहाँ क्यों है? क्योंकि वर्ब बी वर्ब है, उसी को नेगेटिव कर दिया, बी वर्ब was वर्ब को नेगेटिव कर दिया. The flight wasn't easy. Mr. Blario, a 37-year-old engineer, couldn't swim. He couldn't swim. Mr. Blario, and extra information about Mr. Blario after comma. Mr. Blario, comma, a 37-year-old engineer couldn't swim. So it means we learned that Mr. Blario was 37 years old when he flew. When he took up this journey, when he started this journey, he was just 30, he was 37 years old. So this sentence tells us his age at the time, right? And look at the style, Mr. Bladio, comma, and then extra information. A 37-year-old engineer, comma, because the information is complete. Couldn't swim. Mr. Bladio couldn't swim. Yes, Mr. Bladio couldn't swim. And Mr. Bladio was 37 years old. Mr. Bladio couldn't swim. So he didn't want to come down in the channel. So he didn't want to come down in the channel, guys. Mr. Bladio he didn't want to come down in the channel. मतलब don't think it means वो नहीं चाहते थे कि वो चैनल में गिरे. ऐसा मत ट्रांसलेट कर देना. कई बार ना शब्दों से ट्रांसलेट करके हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं. We just satisfy ourselves by translating the words literally and we think कि हो तो गया, कर तो दिए. लेकिन ये नहीं सोचते कि वो सेंटेंस का वहां पर मकसद क्या है. कभी कभी उतना डीपली नहीं सोचते, उसको कहते हैं कनेक्ट नहीं करना. कुछ लोग उतना कनेक्ट नहीं करते, उनका मकसद होता है हिंदी कर दिए हो तो गया, वो सोचते ही नहीं है अच्छा इस लाइन का क्या मतलब होगा. कि वो नहीं चाहते थे, ही डिडंट वांट, वो नहीं चाहते थे चैनल में गिरना. कम डाउन इन द चैनल मतलब चैनल में गिरना. ओके, वो नहीं चाहते थे चैनल में गिरना. चैनल यहाँ मतलब एन एरिया ऑफ वाटर. ये जो इंग्लिश चैनल को यहाँ चैनल सिर्फ लिखा है. The English Channel is an area of water between France and England. After all, उनको हवाई जहाज से क्यों गए वो? Because he flew from France to England. फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में there is a body of water. पानी है थोड़ा सा. Okay, and that body of water is called the English Channel. That body of water is called the English Channel. Maybe I should show you the photo first so that you can appreciate this better. The English Channel, the English Channel. Okay, there you go. English Channel here. Screen is not presenting. Give me a second. On your screen now, you can see this is England. This is the capital of England, London. Another city, Bath. Okay. And this blue area is water. Okay. And this is Paris, France, green. So you can clearly see that France and England are not connected by land. They are not connected by land. They are disconnected. And what disconnects them? This water. Because the water here in this area is very narrow. You can see the gap is very small. So such narrow gaps are sometimes called channel. Okay. So this area here is called the English Channel. This area is called the English Channel. Okay. So he flew from here to here, from here to here, from this part of England, France, to this part of England. Okay. So he didn't want to come down in the channel because he couldn't swim. He couldn't. Now imagine a man who is flying for the first time in an aeroplane. Nobody has ever done this before, okay? And he is going in this, he's trying to cross this water area. And imagine if his journey is unsuccessful, if his plane falls, comes down means falls in the channel, into the channel, then he would die because he couldn't swim. A person who could swim would try to swim, survive.
but he couldn't swim, so his flight was not easy for him. He was trying to cross an area of water and he couldn't even swim. Okay, so third problem. Okay, the first problem was that he couldn't swim, right? And that's why he didn't want to come down in the channel. अच्छा, so if we translate again, मैं बोलता हूँ कि ठीक है, हमें सिखाया गया है want मतलब चाहना. He didn't want, वो नहीं चाहते थे to come down in the channel, channel में गिरना. ठीक है, बोल देते हैं वो नहीं चाहते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे चैनल में गिरना, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था. तो तैरना आता तो वो चाहते कि चैनल में गिर जाएं. तो ये बात बोलने का मकसद क्या है यहाँ पे कि उनको तैरना नहीं आता था इसीलिए. नोटिस द वर्ड सो. उनको तैरना नहीं आता था इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो चैनल में गिर जाएं. ठीक है, अगर मैं इसे हिंदी करता हूं तो आपका दिमाग बोलेगा कि सर उनको तैरना नहीं आता था इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि चैनल में गिरे. अगर वो तैरना जानते तो वो चाहते थे कि चैनल में गिर जाएं. तो इसलिए बोलने का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, पद्मा इज एब्सेंट, Padma is sick. Padma is sick. Padma is sick. So she is absent. Padma is sick. So she is absent. Now my question is, अगर पद्मा बीमार ना होती तो आज एब्सेंट होती? तो सो बोलने का मतलब समझते हैं ना. पद्मा इज सिक सो शी इज एब्सेंट. पद्मा बीमार है इसीलिए एब्सेंट है. अगर बीमार नहीं होती तो एब्सेंट नहीं होती. Now the sentence here says he couldn't swim, so he didn't want to come down in the channel. तो अगर मैं कह दूं कि अगर उनको आता तैरना तो वो गिरना चाहते, तो फिर ये लाइन तो नहीं होगा ना. इसका मतलब कि वो चैनल में नहीं गिरना चाहते थे, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ फिर. क्योंकि अगर मैं बोलूं कि वो नहीं गिरना चाहते थे क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था, इसका मतलब होता है कि तैरना आता तो गिरना चाहते, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वो नहीं गिरना चाहते. तो यहाँ क्यों लिखा है ऐसा? ये इंग्लिश का एक वैसा सेंटेंस है जिसको वो इंसान कभी नहीं समझा पाएगा जिसको इंग्लिश की हिंदी करनी आती है. अगर आप कुछ लोगों को जानते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप उनके पास ये सेंटेंस लेके जाएं और ये यही बात पूछें, क्योंकि वो यही हिंदी बताएंगे. 9 out of 10 पीपल और 99 out of 100 पीपल, अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 99 यही बोलेंगे कि उनको तैरना नहीं आता था इसीलिए वो चैनल में नहीं गिरना चाहते थे, क्योंकि उनको शब्दों की हिंदी करनी आती है. अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने देखा है वो शब्दों की हिंदी करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि एक्चुअली बोला क्या जा रहा है. कई जगहों पे ऐसे तो कई जगह डूइंग हिंदी इज फाइन. जैसे ऊपर अभी तक जितना भी पढ़े उसमें हिंदी करना कोई दिक्कत नहीं था, शब्दों से ही हिंदी हो रही थी. बट हियर इट इज अ लिटिल इडियमैटिक, इसको कहते हैं इडियमैटिक. अगर किसी को हिंदी सिंपल आती है और उसके सामने मैंने कहा कि जा यहां से, तुम क्या लड़ोगे मुझसे, तुम किस खेत की मूली हो, तो वो उसको अगर ईडियम्स का एहसास नहीं है तो बोलेगा ये खेत और मूली का बातचीत क्यों ले आया बीच में, समझ नहीं आ रहा. लड़ाई की बात हो रही थी तो उसने मुझे खेत और मूली की बात क्यों की यार, यहाँ तो खेती वेती की बात नहीं हो रही है. उसको समझ नहीं आएगा कि मैंने उसको कहा तुम एक ऑर्डिनरी इंसान हो, राइट, तुम नहीं लड़ पाओगे मुझसे, तुम क्या लड़ोगे मुझसे, तुम किस खेत की मूली हो. हाँ, तो वो कहेगा ये खेत और मूली क्या हो रहा है. अगर समझदार है तो ठीक है, और समझदार नहीं है तो थोड़ा पता नहीं कैसे कोई लोग समझदार नहीं होते. जैसे यहाँ पर कुछ लोग कह देंगे इसीलिए वो नहीं गिरना चाहते थे. मुझे अजीब लगता है ऐसा सोचना कि मैं क्यों सोचूं कि वो नहीं गिरना चाहते थे क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था. ऐसा मैं सोचता हूँ इसका मतलब होता है कि वो गिरना चाहते अगर उनको तैरना आता, लेकिन वो भी नहीं है तो भी ऐसा क्यों बोल रहे हैं. इसका मतलब है he didn't want to come down in the channel का हिंदी ये नहीं हुआ कि वो गिरना नहीं चाहते थे. इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो गिर जाते तो रिजल्ट बुरा होता, तो रिजल्ट बुरा होता, क्योंकि लिखा है इफ ही कुडंट स्विम सो ही डिडंट वांट टू कम डाउन इन द चैनल. तो इसका ये हिंदी निकालते हैं उनको तैरना नहीं आता था, अगर वो गिर जाते तो रिजल्ट बुरा होता, अगर वो चैनल में गिर जाते तो रिजल्ट बुरा होता. ये तो पक्का है कि नेचुरल है, क्योंकि अगर वो तैरना जानते और गिर जाते तो रिजल्ट बुरा नहीं होता. तो ये एक इडियमैटिक यूज है वांट का, यानी मुहावरेदार यूज है. फॉर एग्जाम्पल,
आप किसी से बहस कर रहे हो, यू आर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद समबॉडी, आप उसके थोड़े नजदीक चले गए बहस करते करते, और वो कह रहा है यू डोंट वांट टू स्टैंड सो क्लोज टू मी व्हेन यू आर सेइंग सच थिंग्स। वो कह रहा है यू डोंट वांट टू स्टैंड सो क्लोज टू मी व्हेन यू आर सेइंग सच इंसल्टिंग थिंग्स। जब तुम ऐसे उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हो इंसल्ट करने वाली, तो इतने नजदीक मत खड़े रहो। इसका हिंदी ये मतलब नहीं हुआ कि तुम नहीं खड़ा रहना चाहते हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इतनी उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे हो, इतने करीब खड़े हो, इसका रिजल्ट बुरा होगा। इसका मतलब वो उसको थ्रेटन करा कि हम तुमको मार देंगे घूसा। उसको इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि हम तुमको घूसा मार देंगे, आई विल किक यू और पंच यू, आई विल फिजिकली असॉल्ट यू, क्योंकि तुम नजदीक होके बात कर रहे हो उल्टा पुल्टा मेरे। थिंक अबाउट इट, पीपल आर हैविंग आर्ग्यूमेंट विद 10 फीट डिस्टेंस, तो टाइम लगता है अटैक करने में, उतना गुस्सा नहीं आता। बट व्हेन समबडी इज स्टैंडिंग क्लोज टू यू एंड देन सेइंग समथिंग रियली बैड, अगर इतना नजदीक आके कुछ उल्टा पुल्टा बोलता है तो आपका नेचुरली हाथ और पैर चल जाता है। एम आई राइट? तो उसने कहा यू डोंट वांट टू स्टैंड सो क्लोज टू मी व्हेन यू आर सेइंग सच इंसल्टिंग थिंग्स। ओके, अनदर, there is a girl in your college and she has a bad reputation. She has a bad reputation that she only dates rich guys. Okay, she has that reputation that she only dates rich guys for some time, as long as they have money. Okay, and then your friend who is new, he doesn't know about her reputation. He is being friendly with her. Okay, he's sitting with her, he's going out to have coffee with her. Then you say, hey, you know what? You don't want to date that girl. आप कहते हैं क्या? Hey, you know what? You don't want to date that girl. इसका हिंदी ये नहीं हुआ कि तुम उसको डेट नहीं करना चाहते हो। ये बोलने का कोई मतलब नहीं निकलता है यहाँ पे। अगर कोई ऐसा इंग्लिश में बोला है तो ये तो हो ही नहीं सकती हिंदी कि तुम उसको डेट नहीं करना चाहते हो। क्या मतलब होता है ऐसा लाइन बोलने का? कौन बोलता है ऐसा? तो अंग्रेज भी पागल नहीं, कोई ये बोल रहा होगा। वो तुम समझ रहे हो ऐसा, ये तुम्हारा पागलपन है, राइट? वो कह रहा है उसको डेट करने का रिजल्ट बुरा होगा। तो समटाइम्स यू डोंट वांट टू डू समथिंग, यूज किया जाता है कि जो तुम करोगे उसका रिजल्ट बुरा होगा। जस्ट लाइक हियर, ही डिडंट वांट टू कम डाउन इन द चैनल, एंड आपने अपने दोस्त को क्या कहा? हे यू नो व्हाट, यू डोंट वांट टू डेट दैट गर्ल। तो वो बोलेगा व्हाट डू यू मीन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाट हैपेंड? शी इज अ गोल्ड डिगर। ओके, तो अब ये बातचीत हुई दो लोगों के बीच, आपने मूवी में देखा। ओके, you saw this conversation in a movie, okay, in a TV series, that a guy says to his friend, you know what, you don't want to date that girl. Then he says, what do you mean, why, what's wrong? Oh, she's such a gold digger, everybody knows about her. Are you serious? Yeah, obviously you are new here, we are not. Oh, okay, but she seems very different. Only because you are new here. अब बात खत्म यहाँ पे हो गई। तो अब आप क्या समझे, उसने शुरुआत में क्या कहा था? यू डोंट वांट टू डेट दैट गर्ल। उसने क्या कहा? तुम नहीं करना चाहते उसको डेट। अरे वो डेट कर रहा है, वो करना चाहता है, फिर तुम क्यों बोल रहे हो यू डोंट वांट टू? बिकॉज आप कह रहे हो इनडायरेक्टली आप उसको डेट करोगे और आपका इसका नतीजा बुरा होगा। और बताओ, सपोज योर you did something silly in the class, okay, and the principal called you into the office and he says, you don't want your parents to find out about it, do you? उसने कहा, प्रिंसिपल ने कहा, you don't want your parents to find out about it, do you? आप नहीं चाहते कि आपके मम्मी पापा को इसके बारे में पता चले। ये क्या मतलब बोलने का, आप नहीं चाहते हैं? प्रिंसिपल क्यों बोल रहा है आपको ऐसा? वो बोल रहा है कि अगर मम्मी पापा को बता देंगे तो समझ में आ रहा है ना क्या होगा। वो हम लोग बोलते हैं ऐसे, वो वही बोल रहा है। अगर यहाँ पे बिहारी प्रिंसिपल होता तो वो क्या बोलता बच्चे को बुला करके ऑफिस में कि मम्मी पापा को बताएंगे तो पता है ना क्या होगा तुमको। और अगर उल्टा ऐसे ही बोले, क्लास वाला लड़का बोले कि जाके प्रिंसिपल को बोल देंगे तो पता है ना क्या होगा तुमको, तो वो इंग्लिश में बोल सकता है, यू डोंट वांट द प्रिंसिपल टू फाइंड आउट अबाउट व्हाट यू सेड टू मी। तो यू डोंट वांट का हमेशा हिंदी नहीं होता तुम नहीं चाहते हो। ये सब उन्हीं लोगों को पता होगा जो उस लैंग्वेज को महसूस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट है मेरे दोस्तों,
that 99% of the teachers teaching, okay, they know the grammar and they know that kind of English which can be literally translated. For example, every teacher knows, I don't want to go, हम नहीं जाना चाहते हैं. इसके आगे वो want का यूज नहीं जानते, उनको उसके आगे का सोचने का जरूरत नहीं समझ में आता. उसकी वजह है क्योंकि स्टूडेंट इतना सीख करके खुश हो जाते हैं, वो अपने आप को पुश नहीं करते. तो दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट इंग्लिश में कोई भी नई लैंग्वेज सीखते समय जब आप उस लैंग्वेज को ऐसे इंसान से सीख रहे हैं जो उस भाषा को सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं जानता, किताबों से नहीं जानता, then you will learn that language more naturally. So I just explained that line because आप पढ़े तो जरूर, लेकिन वही है, आपको खुद परेशान होना चाहिए उस लाइन पे दोस्तों कि क्या मतलब होता है. आप जब भी ये बात, जब आपको समझ में आ जाए हिंदी और फिर भी आप परेशान हो ना, तो आपका दिमाग काम कर रहा है दोस्तों. But a lot of the students put a simple target कि मुझे हिंदी समझ में आ गई, बात खत्म है. तो वो कुछ हिंदी को चेक नहीं करते कि वो कैसे हिंदी की है. वो they just read he didn't want to come down channel, वो नहीं चाहता था कि वो चैनल में come down मतलब सर, वो मुझसे पूछेंगे, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछेंगे come down मतलब, वो didn't want के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि उनका दिमाग फिक्स है कि इसका तो एक ही हिंदी हुआ है, क्या वो नहीं चाहते थे. तो वो मुझसे पूछते कम डाउन मतलब, मैंने कहा कम डाउन इन द चैनल, चैनल बता दिया, तो कम डाउन इन द चैनल मतलब चैनल में गिरना. अच्छा ठीक है, तो वो चैनल में नहीं गिरना चाहते थे, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया. वो नहीं पूछते कि क्या मतलब है, वो नहीं गिरना चाहते थे. तो पूरी तरह से समझने की कोशिश नहीं करते. और मुझे ये चीज हमेशा से लगी, जब भी मैं सीखता था इंग्लिश, तो ऐसी कोई सेंटेंस आए तो मैं कहता था ये इसका मतलब तो नहीं हो सकता. एंड दैट हेल्प मी सो मच, दैट हेल्प मी. अच्छा देखो, जब तक तुम एक आंसर को डाउट नहीं करोगे, कुछ दूसरा आंसर ढूंढने की कोशिश करोगे. फर्स्ट स्टेज इज व्हेन यू डाउट समथिंग. As long as you accept that this world is created by Almighty God, will you try to understand anything else? अगर आप इस आंसर को एक्सेप्ट कर लेते हो, बारिश कैसे होती है, ऊपर वाला करता है, ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया इस आंसर को. आपके दिमाग में अब कुछ है ढूंढने के लिए, कोई ख्वाहिश है कुछ जानने की, क्योंकि आपके पास तो आंसर है ही. क्या बारिश कौन कराता है, ऊपर वाला कराता है. तो व्हेन यू एक्सेप्ट एन आंसर, डू यू गो टू लुक फॉर अनदर आंसर? No, you only go to look for another answer when you don't accept the first answer. Am I right or wrong? Here, जितने लोगों ने ये सोचा, he didn't want to come down in the channel, इसका मतलब वो चैनल में नहीं गिरना चाहते, तो वो खुश हैं, हो गया. वो जब इसको रिजेक्ट करेंगे कि अरे इसका मतलब क्या होता है, ये तो बकवास बात हो गई, तो वो मतलब नहीं गिरना चाहते थे क्योंकि उनको स्विमिंग नहीं आती थी. अगर स्विमिंग आती तो गिरना चाहते कि क्या मतलब है, तब वो ढूंढेंगे दूसरा आंसर. एम आई राइट? नॉट. तो जहां समझने के लिए सबसे पहले, एक्स्ट्रा समझ डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो सब कॉमन कॉमन नॉलेज है उसको रिजेक्ट करना पड़ता है. एम आई राइट? उसमें खराबी देखनी पड़ती है कॉमन आंसर में. अगर आप कॉमन आंसर में खराबी नहीं देखोगे तो आप उसको रिजेक्ट क्यों करोगे? अगर आप इस आंसर में खराबी देखते ही नहीं, हाँ ही डिडंट वांट टू कम डाउन, वो नहीं गिरना चाहता था, गिरना नहीं चाहता था, हाँ नहीं गिरना चाहता था क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी तो गिरना नहीं चाहता था, यही बार बार बोले जा रहे हैं आप. हाँ सही बात है, उसको स्विमिंग नहीं आता था इसलिए नहीं गिरना चाहता था. लेकिन आप ये नहीं सोच रहे इसके बदले पलट करके कि अच्छा आता तो गिरना चाहता, उसका उसका चाहना क्या था, क्रॉस करना, टू बी सक्सेसफुल राइट विद दिस जर्नी. बट जब तक आपको अपने आंसर में खराबी ना दिखे, आप दूसरा ऑल्टरनेटिव आंसर नहीं ढूंढते. If a teacher is teaching you and you don't notice any problem with his teaching, तो आप दूसरा टीचर तलाशोगे क्या? लेकिन जब आपको उसके आंसर्स में प्रॉब्लम्स दिखने लगेंगे, then you will look for another teacher, right? The same is true about everything in life. First, you have to reject something in order to try to look for another. If you are in love with your wife, why would you look for another woman? Maybe ये थोड़ा सा अलग हो जाता है मैटर,
ये थोड़ा अलग हो जाता है, इस बात को छोड़ दिया जाए। ओके, डोंट टेक माई दिस एग्जाम्पल ऑफ माइन, दिस एग्जाम्पल वॉज नॉट राइट। कुछ लोग एकदम पूरी तरह से अपनी पत्नी को चाहते हैं एंड स्टिल दे आर इंटरेस्टेड इन अदर वुमेन, यू नो, ये मामला अलग है, दैट्स अनदर थिंग, लीव इट। ओके ओके, so moving on, guys, first problem was he couldn't swim. Obviously it was going to be very dangerous for him if he had fallen, if he had fallen। देखो क्या है कि चूंकि this is an elementary level course and conditional sentences cannot be used in this course, that's the reason कि उन्होंने ये वाला स्ट्रक्चर पकड़ा यहाँ पे। ये बोलचाल का सेंटेंस है दोस्तों, यू डोंट वांट टू डू दिस, मतलब आप थ्रेटन कर रहे हो किसी को, ठीक है। For example, I was in a mall with a girl. Secretly, my wife didn't know about her. Okay? And we were having fun in the mall. And then I received a phone call. Okay? And the person said, how are you, Vinay? I said, yeah, great. So who was that girl in the mall? I said, who are you? He says, forget about who I am. I think you don't want your wife to find out about that girl. उसने क्या कहा? I think you don't want your wife to find out about that girl. उसने मुझे धमका दिया कि वाइफ को पता चलेगा तो क्या होगा, पता है ना, इसने ये कहा। उसने ये नहीं कहा आप नहीं चाहते हैं आपकी पत्नी को पता चले, ये नहीं बोल रहा है, वो लिटरली नहीं ट्रांसलेट करेंगे इसको, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो क्या आपके पास ऐसा दिमाग है जो हर एक सिचुएशन में, ये हिंदी में तो कम से कम कह ले कि ये हिंदी तो अच्छी हिंदी नहीं है इसकी, ये कह सकता है आपका दिमाग? इंग्लिश भले ही आप ना समझें, लेकिन जो उसकी हिंदी होगी उसके बारे में तो आप फैसला कर सकते हो ना कि ये हिंदी तो नहीं होनी चाहिए इस सिचुएशन में, ये क्या बकवास हिंदी है इस सिचुएशन में। आप समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? कि आपके अंदर है ये क्षमता। एंड इफ यू आर वन ऑफ दोज पीपल who have this rare quality, I will say, because I've met a lot of people, but unfortunately very few of them have this rare quality, you know. So if you are one of those people or some of those people, then guys, it is going to be easy for you to learn, because you will always have this question, you will look for the answer। एंड जो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ कुछ भी बोल दो, हाँ हाँ ठीक है, हिंदी तो हो ही गया ना, हाँ चाहे, तो फिर उनके लिए मुश्किल है सीखना, बिकॉज उनका दिमाग नहीं चलता खुद से। Second problem. What was the second problem? He couldn't walk very well. The flight was not easy because there was another reason. He couldn't walk very well because of an injury to his leg. Because of an injury to his leg. एक इंजरी की वजह से, ऐसे ही बोलते हैं ना हिंदी में। They take a look at the sentence here. Because of an injury to his leg. Because of an injury. The whole class was disturbed. पूरा क्लास डिस्टर्ब हुआ एक स्टूडेंट की वजह से। कैसे बोलेंगे? Because of a student. Because of only one student. All right. The whole class was disturbed because of only one student. One student. Only one student. Because of an injury to his leg. तुम्हारी वजह से। अभी भी मुंह नहीं चल रहा आपका? मुंह नहीं चल रहा तो दिमाग में नहीं चल रहा, इसका मतलब वहां से कुछ दिमाग में नहीं गया अभी तक ना, जो सामने लिखा है वो हिस्सा नहीं दिमाग पकड़ पा रहा है सेंटेंस। हाँ बोलिए। तुम्हारी वजह से, देख के नहीं पहचान पा रहे कौन कौन से वर्ड्स वहां से लेंगे और कौन सा नया अपना डालेंगे। हाँ बोल दो। बिकॉज ऑफ यू, बस यही तो है दोस्तों, यही तो ऑब्जर्व करना कहते हैं। इस तो बोल रहे तो बोलो ना कॉन्फिडेंट, इतना डरने का क्या बात है? वही बोल रहे हैं, बोलने के बाद एकदम धीरे धीरे बोलने के बाद बोलो वही तो बोल रहे थे, तो हमने रोका था 2 बार बोलने से, तो बार बार पूछ रहे बोलने के लिए, तो बार बार बोल दो। बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। ओके, महंगी फीस की वजह से, because of the expensive fee, because of the high fee, all right, whatever। अब बोलो हम कॉलेज नहीं जा सके महंगा फीस के वजह से।
ऑलराइट, अभी एक्स्ट्रा बन गया ना फ्रेज यहां से दिमाग में। तो हम स्कूल I कॉलेज नहीं जा सके, इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, आई couldn't go to college. I couldn't go to college because expensive fees. Yes, all right. So there is a song, because of you, because of you. There is a very beautiful song. I will play someday. Because of you, आपकी वजह से, because of you. Okay. अगर किसी दिन आप मुझे हाँ अंडरलाइन करो 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 करो, बहुत जरूरी, हाइलाइटर लो, हाइलाइटर लो, ऐसे ऐसे फ्रेजेस को अंडरलाइन करो जिसमें बाद में प्रैक्टिस कर सके कि यही तो सर पढ़ाए थे। बाकी वो इसमें कुछ नहीं है पढ़ाने के लिए। देखो, he couldn't walk, this part is not special. Sorry, my mouse these days is strange. Okay, I need another. He couldn't walk में कुछ नया नहीं है. You have studied this I in unit couldn't walk 5. very well. Okay, you studied this in unit 5. He couldn't walk. Subject can't का negative of, past form couldn't. He couldn't walk very well. He couldn't walk very well because of an injury to his leg. तो अच्छा, because of an injury. अब कभी हिंदी में तो ऐसे ही बोलते हो ना, चोट की, तो because of an injury. तो कंपेयर करके सीख जाओ। आवाज नहीं आ रहा है आपका, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे। हम ऐसे बोल रहे हैं दो सेंटेंस में, लेकिन हम चाहे तो इसको बिकॉज ऑफ से भी बोलेंगे। आपको हिस्सा दिख रहा है कौन क्या किसकी वजह से? बोलो। सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज, बहुत हल्ला हो रहा है यहाँ पे। आई कांट हियर यू, आई डोंट हियर यू, दोनों में से कोई बात खास फर्क नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ द नॉइज हियर, बिकॉज ऑफ द नॉइज। अच्छा, कोई चीज की वजह से होगा ना, बिकॉज ऑफ के बाद कोई नाउन ही आएगा, ये सोचने वाली बात है। बिकॉज ऑफ के बाद क्यों, बिकॉज ऑफ वजह से, तो कोई चीज की वजह से ना ज्यादा पी लेने की वजह से वो बेहोश हो गया। ही पास्ड आउट, ही पास्ड आउट, बेहोश होना। ही ही पास्ड आउट, आगे बोल दो। बिकॉज ऑफ, ये बोलने के बाद सोचो कि आगे क्या बोलना है। ये पहले मत रुक जाओ, ही पास आउट का रुक मत जाओ। ही पास्ड आउट बिकॉज ऑफ ज्यादा पी लेने की वजह से। क्या था? ज्यादा पीना। तो कैसे बोलेंगे आप यहाँ पे? अभी ये सोचना होगा। धीरे धीरे सीखने से, सुनने से सीखेंगे। एक थोड़ा सा सीखा अभी, और सुनेंगे तो और सीखेंगे। यही है, एक कोई भी ना हाँ ना नहीं होता कि बच्चा बड़ा हो गया, हाँ बच्चा छोटा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, बीच में ऐसा भी सिचुएशन आता है। यानी कि इट इज, योर लर्निंग is not going to be drastic. You're going to learn in small steps. So first thing was he passed out, वो बेहोश हो गया because of, अब हम बोल रहे हैं ज्यादा पी लेने की वजह से, तो ओवर ड्रिंक मतलब ज्यादा पी लेना। अब यहाँ क्या बोलेंगे? एक ग्रामर का रूल जानना, कभी भी वर्ब में, वर्ब को नाउन के तौर पे यूज करना है तो आईएनजी डाल दो। सो ही passed out because of over drinking, because of over drinking. Okay. Okay. So anyways, he couldn't walk very well. तुम्हारा खुद का दिमाग ऐसे ही चलना चाहिए पढ़ते समय, इसलिए पढ़ने से सीखोगे। ये जरूरी नहीं मेरा वहां रहना जब तुम पढ़ रहे हो तो। Okay, you can do it alone as well. He couldn't walk very well.